Okay. Union budget. Since this year we have questions which will be based on some charts, some data. So we can expect that those charts can be picked up from government budget, right? And then government budget is also important for CUET perspective. Government budget is also important from case study perspective. So all these questions can be expected, maybe chart based, maybe table based, maybe case study based, or maybe MCQs in CUET. So keeping that in mind, I thought of organizing this webinar, which very few students have joined as compared to the number of students I was expecting. Students have more important things to do in their lives. Okay. Talking about union budget 23-24. अगर आप budget को at a glance देखो तो it seems that it is a wonderful budget and you will find no loopholes at all. लेकिन थोड़ा सा अगर हम एक इकोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव से एनालाइज करें, so any of you who has read budget and found any loopholes in the budget? How many of you have read it? Means listen to some news, watch some videos, read some content. Raise your hands, please. Okay, Ayushi raised hand. Anyone else? No. Okay. Ayushi, anything you would like to add on where you found that batch was this budget was somehow lacking in some of the aspects? Ma'am, I read that there will be no income tax till 7 lakhs, up to 7 lakhs. Yeah, this is very, very important for class 11. This is how statistics are manipulated. Now she has picked up a thing. Let me start from here only. So she has given me a starting point. You know, government is saying no tax up to 7 lakhs. So it's not so that if your income is say 10 lakhs, so till 7 lakh, no tax. No. If your income is up to 6 lakh 99,999, there is no tax. But the moment your income touches 7 lakh, the slab that applies to you is 0 to 3 lakh, no tax. Okay. Then 3 to 6, 5%. 6 to 7, 10%. No. So your tax liability will be 5% on 3 lakhs. 5% of 3 lakh is 15,000 and 10% of 1 lakh, that is 10,000. So your tax liability will be 25,000. Let us suppose your income is 7 lakh 1,000. So up to 7 lakh may be no tax. Then after on 1,000, there is a tax of 10%, that is 100. Yes. So your tax liability will be 15,100. Getting it? 6 to 7 lakh 1,000. Sorry, it will be 10,100. So it will be 25,100. Total tax liability will be 25,100. So a layman is very happy. Okay, a huge exemption has been given, but it is only for those whose income is below 7 lakh. If you are crossing that bracket, which most of the middle class will, because these days in 50,000, you can't get even the basic needs. So most of the middle class families are earning more than 50,000. I know. Right? So they will fall in the bracket of taxes. Getting it? Then education and health cess has been increased and now it is 4%. So on this 4% cess will also be levied. Getting it? Which will come out to be 1,004 something. It will be 1,004. Let me use calculator because sometimes calculation might go wrong. 1,004 only. Yes.
So your total tax liability will become 26,104 the moment your income crosses 7 lakh rupees. Getting it? So most of the taxpayers are, and this also you will avail of this offer only when you are ready to sacrifice whatever benefits you were getting under those savings, whichever you used to do under Section 80C and all the benefits you were getting under HRA. आप उसको पहले sacrifice करने को ready हैं तो आपको ये benefit मिले. इसलिए ज्यादातर लोग जो हैं they are going with the old regime, not with the new regime. And they are saying कि unless and until you specify which regime will you follow, जो एक default regime होगी वो new वाली ही होगी, old वाली आपके ऊपर applicable नहीं होगी, right? तो layman is most interested into this कि ये क्या आया है टैक्स में नया चीज. तो स्लैब चेंज नहीं हुए हैं, स्लैब वही है. स्लैब पहले 0 to 2.5 लाख थे, अब उसको 3 लाख तक की एग्जाम्पशन जरूर की गई है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है कि 7 लाख के ऊपर वालों के लिए स्लैब ही 7 लाख कर दिया गया है कि 7 लाख तक नो टैक्स. नो, नाउ देयर आर 5 slabs, so that goes like 0 to 3 5%, then 3 to 6 मतलब 3 लाख बढ़ाते जाइए और 5% बढ़ाते जाइए 10, then 6 to 9 15, 9 to 12 20 and last में 12 to 15 25 and 15 above 30%. These are the tax slabs they have introduced. Sorry. 0 to 3 no tax. मैं वही कह रही हूँ, ये 25 वाला कहीं था. I'm sorry. ठीक है, 3 to 6 5, 6 to 9 10, 9 to 12 15, 20 and then 30%. These are the new tax slabs. Okay, so if your income is supposed 12 lakh, then that 7 lakh concept is not applicable to you. Understanding this? This is how we, present things so that general public, because when a layman will go for voting, that fellow doesn't have this technical knowledge, है ना? उसको तो यही लगेगा कि हाँ गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा जो है टैक्स फ्री दे दिया है. Yes or no? ठीक है, इसलिए चीजों को इतना घुमा फिरा के प्रेजेंट किया जाता है to take an advantage of the illiterate population that we have. Okay. Right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Moving towards more concepts. See, in government budget, these are the revenue receipts we are expecting, and these are the capital receipts that we are expecting. There is revenue expenditure, here is capital expenditure. We are not getting much into the figures, but in case you get this, you will simply elaborate what is revenue receipt, capital receipt, revenue expenditure, capital expenditure. Suppose this chart is given to you and you are asked to analyze, right? Now, another aspect which we should understand as citizens is that budget is drawn for India at 100. And it is very tough to analyze an economy for such a long period of time. Whenever you are making a budget, we always say make short-term plans. आप जब अपने career plans भी बनाते हो तो आप कैसे बनाते हो? आप ऐसे बोलते हो कि जब मैं 50 साल की हो जाऊंगी मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी होगी? नहीं, आप कहते हो मुझे 12th में इतना परसेंटेज लाना है. Yes or no? Yes, या ma'am. मुझे जो है सीए करनी है, मुझे लॉ करना है, तो आप अपने शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाते हो या सीधा ये कहते हो बाय द टाइम आई विल बी 50 years old इतना इतना हो जाएगा? तो प्लानिंग कभी इतने लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए, छोटे छोटे पीरियड्स की होनी चाहिए? Short term.
शॉर्ट टर्म। दूसरा जो आपने नोट किया होगा वो ये देखा होगा कि जो भी डाटा दिए गए वो दिए गए फॉर 9 years, तो 9 years के स्टैटिस्टिक्स सुनने में हैवी डोज लगते, जबकि बजट जब एनुअल है तो बजट की जो रिपोर्टिंग है ऑटो मोड पे वो एनुअल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। है ना, जब बजट एनुअल है तो बजट की रिपोर्टिंग भी एनुअल चलेगी, यस मैम। right? So this is how the things are somehow mm, dicey, and somehow government tries to befool us, and we also get befooled very easily. जैसे एजुकेशन बजट बहुत कम दिया गया है इस बार, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कब ये जो है कोठारी कमीशन के कंडीशंस फुलफिल करेंगे, और ये तो एजुकेशन बजट ईयर बाय ईयर कम ही करते चले जा रहे हैं. लेट्स लुक एट हाउ एजुकेशन बजट इज. टोटल बजट 45 lakh 3,097 crores. Okay, out of which we are expecting to do 10 lakh 961 crore of capital expenditure. Effective capital expenditure, which will be beyond your disinvestment things that we shall receive, that is 13.71 lakh crores. But out of that, we are spending hardly, I show you sector wise. Here we come. Education is getting only 1,12,899 crores. So if I calculate the percentage, let me do it for you. 45,03097. It is coming out to be 3.9%. 3.9%. However, earlier it was 4.18%. Am I right or wrong? है ना? Where are we spending the most? So in case suppose you get this table, so we can say that government is giving the highest priority to transport and defense, because the figures are in descending order. It is also showing that a huge amount of government budget is getting into the fulfilling the interest obligations. So that means we need to reduce our loans. Yes. PM Kisan is getting only 60,000 crores. Crores seems to be a very big figure when we talk in terms of a nation. But a country where 60 crore population is Kisan, and you are allotting a budget of 60,000 crores. So crore and crore cancel out each other. Per Kisan gets 1,000 only. Yes or no? Yes ma'am. Yes, ma'am. So figures seem to be huge, but actually they are not. Okay. I'm sorry. Proceeding further, government also, declared this time that GST share is going to be more than the income tax. And in spite having this much of revenue, we are on our own, we are expecting that 34% will be contributed by the borrowings. So that also is a big question mark, that why are we borrowing this much then? Right? And in terms of tax receipts, government says that direct taxes are growing at a larger speed, which again is a big question mark, because each and everybody is paying indirect taxes. Getting it? So somewhere we also raise questions on the statistics, on the accuracy, authenticity of the statistics being given. Then even if we assume these statistics are authentic, then we raise a question mark on why. If statistics are these only, then why are they like that?
However, our common sense says it should be vice versa. Getting it? We are expecting that revenue deficit will decline, primary deficit will also decline. If we are expecting that borrowings will be more, still we are expecting that they will decline because maybe that some of our previous loans might be getting over. कहीं ना कहीं जब हम बजट में इस तरह की स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं से सप्तऋषि, तो इसको आपको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बिकॉज इसमें भी बहुत सारी चीजें आपके चैप्टर से रिलेटेड आई हैं, जैसे ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ में बहुत सारी पॉलिसीज आई हैं which can be used as a case study for your sustainable development chapter. Then youth power में बहुत ज़्यादा skill India आया है which can be used as a case study for your unemployment chapter. Right? So सप्तऋषि का इन्होंने concept लिया कि these will be the 7 priorities of this budget. We shall be focusing on inclusive development. Inclusive development का मतलब होता है a development which will include everybody. For example, when I teach you, I try to include each one of you. I keep asking, is it clear? Speak out. Sometimes I name everybody specifically. So inclusive. Reaching last mile means ki even the most backward region must not be left behind in terms of infrastructure, internet connectivity, roads, transport, every hub. Infrastructure and investment, unleashing potential means we are trying to reach at those resources which are so far there, but we are not using them, like solar energy, wind energy. There is a lot of potential in terms of human capital, natural resources, which we shall be working on. Then green growth, that means we shall be focusing on sustainable development. Youth power, we shall be focusing more on skill India and financial sector. So this is our vision for Amritkar, right? These are the statistics which have been given for 9 years, to which we object. Give us statistics for 1 year. We want to see performance for 1 year, right? They haven't mentioned per capita income has doubled. Now it is not clear whether it is real per capita income or nominal per capita income. In case it is nominal, then even prices have doubled in 9 years. Agreed or not? Understanding how hidden statistics are there. Navya? Yes, ma'am. They haven't mentioned whether it is real or nominal. They have Yes. just mentioned per capita income has more than doubled, but we assume it must be real. Why? Because nominals are never allowed to be given. So they must be real, but otherwise it must be mentioned as well. Okay. So in 9 years, if something is getting doubled, it is not a very big achievement. But वो सुनने में बहुत impressive लगती है. Indian economy has increased in size. Remember, in size. Not in terms of per capita income. Not in terms of export ratio to GDP. Not in terms of share in world trade. Okay. Only in terms of size. Size is huge because population is huge. Yes. And that is why when we look at HDI indices, when we look at many other indices, picture is not as beautiful as it seems to be. Okay. EPFO is Employee Provident Fund Organization. अब PF उन्हीं का करता है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं. तो अगर ये बढ़ रहा है तो it shows that formal sector workers are increasing. But if we look at the statistics of economic survey, it does not clarify this. So many a times what is happening these days, employees themselves are opening their PF accounts. So it has to be clear whether it is due to organized sector or people are opening public provident fund account. Right? Yes, ma'am. Okay.
since it is EPFO, let us consider it is employee provident fund only. It is not public provident fund. Okay. Even then, are they getting only the PF or they are getting all benefits of organized sector? Getting one benefit and getting all benefits are two different things. Okay. 7,400 crore digital payments of rupees 126 lakh crores has taken place through UPI. 11.7 करोड़. एक जो बहुत अच्छा है इस बजट में रहा है वो ये है कि ये बजट सेविंग को प्रमोट नहीं कर रहा है, इसलिए इन्होंने ATC वगैरह पे एग्जाम्पशन देने की बजाय दे आर सेइंग इफ योर इनकम इज अप टू 7 लाख ओनली वी आर गिविंग यू कंप्लीट एग्जाम्पशन. So that means they want you to spend more and save less. Because right now India needs to recover. Yes, So we ma'am. have announced a budget wherein we are trying to promote expenditure. ठीक है. 9.6 करोड़ LPG connections, ये भी 9 years के ही होंगे क्योंकि सारा डेटा 9 years का चल रहा है. ओके. ये भी 9 years के होंगे. 47.8 करोड़ PM जनधन बैंक अकाउंट्स. गेटिंग इट. मतलब ऐसा है कि नाव्या एक टेस्ट में नंबर ले या वो अगले हर साल मुझे उसी का सुनाते रहे तो इट डजंट मेक सेंस, है ना. तो जो आपने पिछले साल किया था वो अचीवमेंट आपने पिछले बार बता दी, अब हमें इस साल की अचीवमेंट्स बताओ. ये बार बार इकट्ठी करके हमें 9 years 10 years की मत बताओ. ओके. काफी ज्यादा गवर्नमेंट ने स्पेसिफिसिटी दी है इस बार कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से हमारे एक्सपेंडिचर जाएंगे. एक जो नया कॉन्सेप्ट आया है, गवर्नमेंट इज सेइंग कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स खोलेंगे, गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, which will be serving in 3.5 lakh tribal students. क्योंकि ट्राइबल एरिया में जनरली गवर्नमेंट स्कूल्स भी नहीं होते हैं उतने अच्छे और उतनी अच्छी फैसिलिटीज बच्चों को एजुकेशनल नहीं मिल पाती. ओके. Urban Infrastructure Development Fund will be established, which will be used for priority sector. In case, you know, some we fall short of funds, then we shall be making use of it. Okay. एंटिटी डिजी लॉकर. अब गवर्नमेंट ने एक एंटिटी डिजी लॉकर का कॉन्सेप्ट दिया है कि MSME अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो एंटिटी डिजी लॉकर में रख पाएगी. गोबर्धन, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बिग एग्रो रिसोर्सेज धन. तो गोबर्धन कैन बी अ फुल फॉर्म एज वेल. ठीक है. वेस्ट टू वेल्थ. जितनी भी आपकी काउ वेस्ट होती है उसे इजीली वेल्थ में कन्वर्ट किया जा सकता है प्रोवाइडेड फैसिलिटीज आर गिवन. तो फॉर दैट वी शैल बी वर्किंग. फिर इन्होंने श्री अन्ना, अब देखो इन्होंने तो इसको श्री अन्ना दे दिया, लेकिन हम इकोनॉमिक्स में ये जितने भी मिलेट्स होते हैं हम इनको इंफीरियर गुड्स का एग्जाम्पल लेते हैं 11th क्लास में जब इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं. ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, ये सारे जो हैं आपके इंफीरियर वो हैं. वीट नहीं आता इसमें, राइस नहीं आता, सारा इंफीरियर फूड को इन्होंने एक अच्छा सा नाम दे दिया. नॉमेनक्लेचर बदल देने से कोई चीज नहीं बदल जाती है, लेकिन लोग हिप्नोटाइज जरूर हो जाते हैं. उसको इन्होंने नाम दिया श्री अन्ना एंड वी शैल बी डूइंग अ रिसर्च इन दिस so that हम इंटरनेशनल लेवल पे we are able to sell it more. क्योंकि इंटरनेशनली भी there are many countries which are extremely poor. For example, Nigeria, then your many such countries are there. Vietnam, if I'm not mistaken, right? They can't afford good quality food. So we can be it can be an opportunity for us if we can increase the output of these things, right? Then Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, Skill India International Centers, Central Processing Centers, Sickle Cell Anemia Elimination Mission, all this will be established. Then we shall be giving PM Vishwakarma Kaushal Samman scheme. ये बेसिकली आर्टिसंस जो होते हैं जिनमें कुछ स्पेशल काइंड ऑफ स्किल्स होती हैं जैसे बुनाई, कढ़ाई,
or people belonging to weaker section, SC, ST, OBC, women. So उन सब के लिए it will be working. Aspirational blocks program covering 500 blocks that will be launched. प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन. अब होना क्या चाहिए ना, नेक्स्ट बजट में सबसे पहले इसको प्रेजेंट किया जाना चाहिए कि ये स्कीम्स लॉन्च हुई थी, इसमें इतना हुआ, इसमें इतना हुआ, इसमें इतना हुआ. इज इट द राइट वे? अगर हम बिजनेस स्टडीज एंगल से देखें या हम जैसे इकोनॉमिक्स में बात करते हैं प्लान्स की, उस एंगल से देखें तो अगले बजट की शुरुआत पहले ही होनी चाहिए कि लेट अस गिव यू अ फीडबैक ऑन व्हाट वी हैड प्लान्ड फॉर इन प्रीवियस बजट, व्हाट वी कुड अचीव, एंड इन कंटिन्यूएशन ऑफ इट वी आर प्लानिंग फर्दर. यस और नो? Yes, Yes, ma'am. है ना? वहां पे आप हमें बुद्धू बना दो 9 इयर्स का डेटा देके, और आम आदमी तो बुद्धू बन जाता है. अगर आप बजट सुनो तो आपको लगेगा वाओ व्हाट अ वंडरफुल गवर्नमेंट, व्हाट वंडरफुल एफर्ट्स इट इज पुटिंग इन. भारत शेयर डिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस. अब ये जो है फिशरीज के लिए भी एक स्कीम आई है, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना कुछ करके, आई विल गेट टू इट. ठीक है, तो फिशरीज के लिए वो फिर आपका केस स्टडीज आ सकता है. तो जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड स्कीम्स हैं, प्लीज पे मोर अटेंशन ऑन दैट. ठीक है, आई गॉट कर्म योगी. इट इज एन इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि लॉन्च किया गया है कि बहुत सारे गवर्नमेंट के जो ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं बट उनको अभी जो है बहुत सारी चीजें यूज करनी नहीं आती, तो फॉर देम इट विल बी वर्किंग. एक हमारा इंडेक्स होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. आप एक ऐसी कंट्री में बिजनेस करना चाहोगे जहां पर रूल रेगुलेशंस मिनिमम हो, जहां पर लीगल फॉर्मेलिटीज मिनिमम हो, जहां पर आपको बिजनेस करने में कंफर्टेबल हो. तो इसलिए बहुत सारी कंप्लायंसेस मिनिमाइज की गई हैं. 3400 लीगल प्रोविजन ऐसे थे जो आप फुलफिल ना करो तो जेल हो सकती थी, उसको हटा दिया गया. तो इससे इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इम्प्रूव होगा और एफडीआई अट्रैक्ट होगी. ठीक है, मान लो यही लाइन देके आपको पूछ लेते हैं हाउ विल इट अफेक्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या हाउ विल इट अफेक्ट बीओपी. तो ड्यू टू दिस मोर एफडीआई विल बी अट्रैक्टेड. I hope you are sitting with a pen and a copy in your hands. You're not sitting like passive listeners. Understood how different lines can be used for us? Make artificial intelligence in India and make artificial intelligence work for India. अब देखो artificial intelligence तो artificial intelligence ही होती है. I was paraphrasing something online. So there is a tool, you put a paragraph, it will change it for you. तो वो क्या करता है, सिनोनिम्स उठा लेता है. तो उसने बिल गेट्स को कर दिया बिल डोर्स. रतन टाटा को कर दिया रतन गुड बाय. गेटिंग इट? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल ही होती है, राइट? बट इन मेनी केसेस इट कैन बी यूज्ड. सो वेयर एवर इट इज यूज्ड, वी नीड टू मेक इट वर्क फॉर इंडिया. ओके, नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी वी कैन मेक यूज ऑफ. देखो ये जो आज की डेट में एक आप पोल्यूशन कंट्रोल करने के सबसे अच्छे तरीके जो हैं वो हो गए आपके ओला, उबेर एंड रैपिडो काइंड ऑफ एप्स. If so easily public transport is available that I just call and I can get a vehicle at my doorstep, what is the need of keeping a personal car? Right? So we need to promote such things through which we can change the lifestyles of the people. PAN will be used as a common identifier for all digital systems. For example, in my bank account, PAN will work. If anywhere I want to prove my identity, first PAN will be attached to your Aadhaar card and then it will be used as a common identifier. Okay. Then this PM Pranam, this is related to your sustainable development chapter. So PM, program for restoration, awareness, nourishment and amelioration of Mother Earth. We need to launch it to we somehow need to give an incentive to our states, to our UTs, union territories.
so that they switch to alternative fertilizers and better system of the working. They switch to a system which is more eco-friendly, but we can't do it like Sri Lanka कि हम suddenly कह देंगे. Obviously हम gradually करेंगे, and that is the right way of doing it. Government has also announced that we shall be spending 2,200 crores on Atmanirbhar horticulture clean plant program. Right. Then government has started Mishti initiative. Mishti is mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes. It can be used for our those states which are touching the seashore. Green credit program. Green credit program means an Environment Protection Act to incentivize and mobilize additional resources for environmentally sustainable and responsive actions. यानी मैं कोई ऐसा business शुरू कर रही हूँ जो environment friendly है, तो I will get loans easily. ठीक है. अमृत धरोहर scheme. So we need to find out what are our somehow जैसे कहते हैं ना कि हाँ ये हमारे लोकल रिसोर्सेज है विच वी कैन यूज, जैसे नीम हो गया, हमारा कार्बन स्टॉक हो गया, हमारी टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज हो गई. तो ये हमारी अमृत धरोहर है जो अभी तक हम पूरी तरह यूज नहीं कर पा रहे. वी नीड टू यूज इट. तो बजट में बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन जहां पर जो चीज हमें कम बताई गई है या नहीं बताई गई या थोड़े ऐसे तरीके से बताई गई है कि उसका मीनिंग कुछ और है और हम समझे कुछ और, तो दैट ऑल्सो वी शुड. ठीक है ना. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम. गवर्नमेंट ने कहा है कि 47 लाख यूथ जो हैं दे विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क अंडर समबडी, जिसे हम बिजनेस स्टडीज में कहते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. जैसे एक लड़का है, मान लो वो 10 साल अगर किसी बाइक के वाले के पास काम करता है तो बाइक का एक्सपर्ट हो जाता है. जितना ऑटोमोबाइल इंजीनियर को नहीं आता उससे ज्यादा उसको आता है बाइक के बारे में. तो ऐसे रजिस्ट्रेशन होंगे एंड दे विल बी गिवन स्टाइपेंड ऑल्सो while learning. ऐसे ही पहले होता था इनक्रेडिबल इंडिया, नाउ दे आर सेइंग देखो अपना देश. सो अंडर दिस वी शैल बी प्रमोटिंग टूरिज्म, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स, जो भी हमारे बॉर्डर से अटैच्ड विलेजेस हैं दे विल बी गिवन प्रायोरिटी इन दिस. नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री. तो आपको कहीं पे भी कोई भी इट विल बी एन ऐप, आपका एक ऐसा सिस्टम बनेगा वेयर यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ फाइनेंशियल एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट वन प्लेटफॉर्म. Okay, so I'm concentrating only on those things which are related to our syllabus. Green hydrogen mission, we are expecting to work on it till 2030. Acha, amendment proposed to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act and RBI Act. Now they are not done yet, they are proposed. For doing that, once again they will be presented, and once given approval only then they will be made. Right. Countries looking for digital continuity solutions would be facilitated for setting up their data embassies, where they can, keep all the statistics stored. सेबी को हम पावर और बढ़ाएंगे ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी किसी तरीके का लूप होल बचे स्टॉक मार्केट में. महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, एक न्यू स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट लॉन्च किया जाएगा, महिला सम्मान, जिसका जो है जिसमें women can save up to 2 lakh for a tenure of 2 years, and they will be given interest rate of 7.5% with partial withdrawal option as well. Capital expenditure की बात करें तो government capital expenditure basically it is planning mainly in infrastructure sector only. However, इस बार focus agriculture के ऊपर भी काफी ज्यादा है. तो इसमें इन्होंने काफी सारी schemes बताई हैं. ये PM मत्स्य संपदा योजना, this is important for fisheries. Right, so I will share these links with you so you can find the important points. Okay, now if we come to education, तो
एजुकेशन के लिए हमने 1,12,898.97 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। अब आप देखो कहीं भी ये परसेंटेज में नहीं बता रहे हैं इसको, क्योंकि परसेंटेज वाइज इट हैज रिड्यूस्ड, which is a big question mark on the government. स्कूल एजुकेशन को इतना बजट दिया है इन्होंने, हायर एजुकेशन को इतना दिया है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी विल बी स्टार्टेड। अब सबको पता है कि इट इज वेरी टफ टू लर्न थिंग्स ऑन अ मोबाइल और अ लैपटॉप। बुक खास करके मोबाइल या लैपटॉप पे पढ़ना इज वेरी टफ, बट स्टिल इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल, क्योंकि लिटरली आप देखो बहुत हेल्प हुई है, जहां पर भी बच्चों को ऑनलाइन एनसीईआरटी बुक्स मिल जाती हैं, बहुत ज्यादा हेल्प होती है ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल होने से, especially the students who can't afford to buy much. Yes. हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है हमारा यहाँ से यहाँ गया है, लेकिन वंस अगेन इफ यू विल कंपेयर इट्स वेरी लेस। तो हेल्थ एक्सपेंडिचर भी हमारा जितना बढ़ना चाहिए था, हेल्थ को नहीं मिला उतना। डिफेंस को तो इन्हें देना ही पड़ेगा, डिफेंस के लिए तो हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, तो डिफेंस पे तो क्वेश्चनिंग कर ही नहीं सकते। देखो 3 crore for micro enterprises, 75 lakh for professional with cash payments less than 5%. अगर आप इसको देखेंगे ना, तो ये मैंने आपको जैसे समझा दिया, ये उसी तरीके से रिबेट है। वो रिबेट अलग सेक्शन में मिलती है, वो आपको 7 लाख तक मिल रही है, लेकिन जो आपके स्लैब है, स्लैब वही के वही है जो थे 3 to 6 5%, 6 to 9 10%, 9 to 12 this, 12 to 15 20 and above 15 lakh 30%, राइट। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाई गई है 50,000 तक, फैमिली पेंशन के लिए 15,000 तक। डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम आपका न्यू हो जाएगा इफ यू विल नॉट ऑप्ट फॉर द ओल्डर वन। ये सब टैक्स वाली बातें ना आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट योर पेरेंट्स में बी इंटरेस्टेड इन दिस इन केस दे आर सिटिंग अराउंड, सो फॉर देम इट इज इम्पोर्टेंट, राइट। इनडायरेक्ट टैक्सेस में अगर हम देखें तो काफी चीजों में ड्यूटीज कम की गई हैं, वो पीछे अपेंडिक्स में भी दिया गया है, और काफी चीजों पे ड्यूटीज बढ़ाई गई। ठीक है, जैसे कस्टम ड्यूटी एग्जाम टू है व्हीकल्स पे, कुछ ऑटोमोबाइल्स पे, तो दे आर एक्सपेक्टेड टू बिकम चीपर्स। कुछ चीजों पे बढ़ाई गई है तो दे विल बिकम मोर एक्सपेंसिव, है ना। जिन पे बढ़ाई गई है, सिगरेट कॉमन है, अल्कोहल है, तो वो तो हम चाहते भी हैं जितना बढ़ाना है और बढ़ाओ। वी ऑल्सो वॉन्टेड टू बिकम एक्सपेंसिव। कंपाउंड रबर पे बढ़ी है, ठीक है। This is how the budget is. If you want to have a look at it like specific points, then you can get it this way as well. Any specific questions that you have related to budget? So go through these charts and please take a note of these important schemes. They are important for examination point of view, right? Kabir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubts? Anything you want to clarify? Aditi, you are from Dwarka International School? Okay. Okay. Aditi, you can share my number with your friends also, and you can join my classes for revision as well. Right? Anything else you want me to discuss? तो बेसिकली ये ग्रीन ग्रोथ वाला जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस। कोई भी चार्ट्स आ सकते हैं, इनमें से कोई भी केस स्टडी बन के आ सकती है, कुछ भी इसमें ऐसा आ सकता है कि भाई अच्छा ये तो करंट अफेयर्स में था,
ठीक है, और आप उसको ये नहीं कह सकते इट इज आउट ऑफ सिलेबस। गवर्नमेंट बजट आपके सिलेबस में है तो आप ये मान के चलो कि हाँ ये भी है, राइट। श्री अन्ना वर्ड जो है यूज किया है तो इससे रिलेटेड। अब मिलेट्स लिटरली बहुत ज्यादा जो है ना ये आपके उसमें आते हैं, मतलब बिल्कुल ही खाने लायक भी नहीं होते। आपने कभी किस किसने खाई है बाजरे की रोटी या उसकी? नॉर्मल लोगों को डाइजेस्ट भी नहीं होती, गांव का ही स्टमक होता है जो डाइजेस्ट कर भी लेता है। लेकिन सिंस वी हैव टू प्रमोट इट इंटरनेशनली तो उसको पहले एक अच्छा सा नाम देंगे, तभी वो बिकेगा ना, है ना। तो ये कुट्टू, रामदाना, कंगिनी, कुटकी, कोडो, चीना, सामा, इसको इन्होंने 8 जो है ऐसे वो हैं, इनको इन्होंने श्री अन्ना की कैटेगरी में रखा है। एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू अचीव food security through it. It is also expected that later, once they have better output in these fields, instead of giving wheat and rice through ration, they can give these things. तो भी काफी जो बहुत बार क्या होता है ना, there are many people who are not below poverty line, but just because something is available for free, they want to take an advantage of it. तो वो ले लेते हैं, लेकिन जब मिलेगा ही उस क्वालिटी का तो सिर्फ वीकर सेक्शन ही अवेल करेगा। पूरे बजट में कहीं भी जो है डिसेबल्ड के लिए कुछ नहीं आया, वीक फिजिकली चैलेंज्ड के लिए कोई स्कीम नहीं आई। ठीक है, क्या क्या इग्नोर हुआ है बजट में, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। स्पोर्ट्स बजट बहुत अच्छा नहीं आया। स्पोर्ट्स के लिए अगर हम देखें, इफ आई गो बैक टू दैट एक्सपेंडिचर थिंग, तो जहां पर हमारा डिफरेंट, मैं अभी आपको एक्सपेंडिचर दिखा रही थी कि किस चीज को हम कितना दे रहे हैं, तो हम एक बार जाते हैं। स्पोर्ट्स पे हमने बहुत अच्छा खर्चा नहीं किया है इस बार। 300 करोड़ से बड़ा है बजट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, बट इट इज स्टिल नॉट सेटिस्फैक्ट्री। Here we go. Do we have sports here? Can anyone find? Health expenditure also is too less. Considering the size of our population, आप इसको divide करिए 140 करोड़ से, so you will realize कि per person how much are we spending. स्पोर्ट्स तो अदर्स में आ गया, इन्होंने अलग से मेंशन तक नहीं कर रखा है यहाँ पे। स्पोर्ट्स इज सो इग्नोर्ड। However, sports can be a big way of bringing in foreign exchange to India, because India has a lot of talent in terms of sports. हर क्लास में आपको 7-8 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे who are very good at sports, provided they are given all the opportunities, all the facilities that they need and a proper coach. Is it true or false? True, ma'am. So this is what budget has ignored, and this is how the budget is. Pensions 3,400 करोड़ दिया स्पोर्ट्स को। तो पेंशन भी जो है 4% का शेयर ले रही है बजट में। तो इसको ही कम करने के लिए ना गवर्नमेंट ने डिफेंस का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पेंशन में चला जाता है। तो गवर्नमेंट उसी को मिनिमाइज करने के लिए अब ये अग्निवीर स्कीम ला रही है, जिसमें आपको वन टाइम हम पे कर देंगे, बट वी शैल नॉट बी गिविंग यू एनी फैमिली पेंशन और पर्सनल पेंशन। ठीक है, तो ये जितने भी चार्ट्स है ना, आप इनको एक बार दिमाग में रखिएगा कि इनमें से कोई भी चार्ट आ सकता है। जहां जहां ये चार्ट्स आ रहे हैं ना आपके इस तरह के, they are all relevant. Okay, if you have any questions, good enough, otherwise I will be winding up here. No. Okay, thank you so much. Thank you, ma'am.